Hi, very welcome to this another video on Excel uses. So here we are going to learn on pivoting and this VLOOKUP, how to use VLOOKUP. So we are going to take two problem, and through that problem we are going to learn those things. So there is a customer table in which uh, primary key is customer ID and in orders table primary key is order ID. So हमारा पहला प्रॉब्लम है ये बताना सेगमेंट वाइज टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स. सो कस्टमर्स टेबल में हमारा प्राइमरी की कस्टमर आईडी है, देन सेगमेंट इज अनदर कॉलम, एंड सिंस सेगमेंट वाइज टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स सॉरी ऑर्डर्स बताने हैं, तो हमें ऑर्डर्स टेबल की नीड पड़ेगी. सो यहाँ पे दो तरीके से आप सोच सकते हैं. फर्स्ट, यहाँ पे सेगमेंट हमें पता है. सो कस्टमर्स और ऑर्डर्स टेबल में जो कॉमन की है वो कस्टमर आईडी है. तो हमें इन कस्टमर्स के बारे में पता चल जाए कि कितने कितने ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम काउंट ऑफ ऑर्डर्स का कॉलम बना सकते हैं. बट आई डोंट थिंक दैट इट्स फिजिबल. आप बताओ कि एक कस्टमर एक से ज्यादा ऑर्डर को प्लेस कर सकता है, तो विद इन वन सेल इट विल बी डिफिकल्ट टू लाइक पुट हेयर. दैट्स व्हाई वी आर थिंकिंग ऑफ कि here we know we have customer ID, and which segment they belong, I can get from the customers table. How? This is where VLOOKUPs come into play. So let's make another column for segment. In this formula, VLOOKUP. Then which thing you want to look up? Like I want to get the segment for these customers, so I am selecting one cell, this E2. Then select the table array. Select the table array. Click on F4. Then further, you need to mention in which column index number uh, the segment is present in the customers table. It's in the fourth, and then I want exact match. In most of the cases, it is only exact match people use. You can put zero or false. Now, as you are saying, that we got the segment that is related to this customer ID, and the similar thing we can do for other rows. So we got the segment for all these customers, right? And what the question was asking, segment wise total number of orders. So earlier I didn't have any kind of segment, that's why we can't make any kind of pivot table जो कि मेरे को segment wise total number of order बताए. So हमने अब segment को include कर लिया है, तो हमारे पास सारे जो columns required होंगे वो हमें हमें अभी मौजूद है इस sheet पे. So let us create one pivot table. Select the table, click on insert, then pivot table, existing worksheet. Here only I want to get the pivot table. Then segment wise, no, segment wise you have to group. Here is the segment, and order ID. Order ID will be in the value section. I want to get count of order ID. So we have got like in different segments, how many orders were placed. इन कंज्यूमर इट्स 14, इन कॉर्पोरेट इट्स 2 पे आप देख सकते हो कि सेगमेंट में हमारा कंज्यूमर और कॉर्पोरेट है. व्हेन यू विल गो इनटू कस्टमर्स टेबल, देन यहाँ पे हमारा होम ऑफिस है जो कि नहीं दिख रहा है. तो इसका रीजन ये है कि यहाँ पे हमारा वो कस्टमर आईडी प्रेजेंट ही नहीं है और जिसका हमारे पास सेल्स इंफॉर्मेशन हो. सो हियर दैट कस्टमर आईडी whose segment is home office is not present. That's why here it is not shown. So this is the first problem how we are going to tackle with. हाँ, इन सेकंड प्रॉब्लम हमें ये बताने हैं प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज मैक्सिमम ऑफ सेल्स. सो प्रोडक्ट्स में जाते हैं. प्रोडक्ट्स में हमारा कैटेगरी है ऑफिस सप्लाई फर्नीचर. सो फॉर दिस कैटेगरी व्हाट आर द मैक्सिमम ऑफ सेल्स दैट वी आर मेड, वो मुझे बताने हैं. हाँ, सो हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है. पहला ऑप्शन कि ऑर्डर्स टेबल में
हमारे पास सेल्स की इन्फॉर्मेशन है, कैटेगरी को इंक्लूड कर लें। दूसरा ऑप्शन प्रोडक्ट्स टेबल में, जहाँ पे हमारा कैटेगरी है, हम सेल्स को इंक्लूड कर लें। तो ऑर्डर्स टेबल में हमारा प्राइमरी की ऑर्डर आईडी है, और प्रोडक्ट आईडी इज द कॉमन की बिटवीन आवर ऑर्डर्स है प्रोडक्ट्स टेबल, एंड प्रोडक्ट्स में हमारा प्रोडक्ट आईडी इज द प्राइमरी की। सो सबसे पहले दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, जिसमें हम ये बोल रहे थे कि प्रोडक्ट्स टेबल में हम हमारे पास कैटेगरी है, हम सेल्स को इंक्लूड करते हैं। तो हमारा जो लुकअप टेबल होगा, जिसमें हम लुकअप करना चाहते हैं, उसमें हमारा एक्चुअली हम जब भी लुकअप करते हैं तो हम कॉमन की सहायता से करते हैं। तो प्रोडक्ट आईडी जो है हमारा, उसी की हेल्प से हम लुकअप करेंगे सेल्स की इन्फॉर्मेशन को। लेकिन पहले ऑप्शन पे जाते हैं, जब हमारा सेल्स की इन्फॉर्मेशन ऑर्डर्स में है, कैटेगरी को इंक्लूड करना चाहते हैं, तो इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉमन की है प्रोडक्ट आईडी है, जो कि प्रोडक्ट्स टेबल में प्राइमरी की भी है, और वो लेफ्ट मोस्ट पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमें कोई परेशानी नहीं होगी। सो वी आर गोइंग फॉर द फर्स्ट ऑप्शन, पुट वी लुकअप product id, we are going to look up what's the table array, then what's the category. So category is presented which column index fourth, then 0. Let's see what happens. Office supplies. So we got the category uh, related to our product id. So what was our problem? Our problem was that for each of the categories, what is the maximum of sales that we have made. So we are going to make a pivot table. So uh, select the table, select this table, select this whole table, then go to insert, then pivot table. Obviously we are going to use or we are going to make our pivot table in this current worksheet. So category is going to our base table, then sales is going to our, we want to get maximum of sales, right? So so here you can see that our pivot table is ready. Our first problem was saying that the segment was uh, what are the number of order ID that were placed. Uh, so we got it done. And our second problem was category wise maximum of sales. We also got it done. So overall, there was something common in these two problems, that first we applied the VLOOKUP for getting all the required columns in a single sheet, because for pivot table you have to select one table, right? And in that table you should have all the required columns. So this is how you use this VLOOKUP and pivot table. If you liked my video, then do comment if you have any kind of questions, and do share and subscribe this video. And these all things motivate me to make further videos on these topics. So thank you for watching.